Okay, chalo. Good evening. Good afternoon, all of you. Let us start with the lecture. We have seen some MCQs from the mechanical properties of solids last time. So let us continue the same. Okay. चलो कहाँ तक आए थे हम लास्ट टाइम? देखो ये सारे जो क्वेश्चंस है तो तुम खुद से कर सकते हो आराम से. ये 12th वाला हो गया, 11th वन हो गया, इवन 13th हो गया, ठीक है नहीं? तो let us see this 14th one. Okay, 14th question. Just read it. If the Poisson's ratio of a solid is 2/5 2/5, okay, मतलब Poisson's ratio दिया हुआ है एक सॉलिड का जो कि 2/5 दिया हुआ है. Then the ratio of its Young's modulus to the modulus of rigidity is. So we want to find out the ratio of its Young's modulus to the modulus of rigidity. So for that, we'll have to use the relationship between the Young's modulus and modulus of rigidity that we have seen last time. In last lecture में हमने वो देखा था equation. Yes, we have it as y is equal to 3 into k into 1 plus sigma. याद है? ये हमने इक्वेशन देखा था. Here, this is the equation which we can see clearly. Y equal to 2 into 1 plus sigma, 2 into eta into 1 plus sigma. This is the equation we want to use here. Okay. So here it is going to be but here sigma is actually given to be 2/5 बराबर. सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे इसको तो यहाँ पे मिलेगा हमको y is equal to 2 into सॉरी k नहीं eta है. Okay, so 2 into eta into 1 plus sigma, which is 2/5, right? And if we just simplify this further, then we can get this y upon eta, which is going to be equal to 2 times of what is this 1 plus 2/5? It is going to be 7/5. Yes, and it will be actually y upon eta is equal to 14/5, which is going to be the answer, which is there here in option number 3 here. Okay, which must be the correct one. Okay, ये देखो 16 वाला क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था एक्चुअली थियरी में एक बार. 4 wires made of same material are stretched by the same load. The dimensions are given below. The one which elongates more is. तो देखो उनका लेंथ और डायमीटर चारों का दिया हुआ है बराबर. तो जब चारों वायर्स का लेंथ और डायमीटर दिया जाता है तो ऐसे हालत में कौन से वायर का इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा ये कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए एक सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि जिस वायर के लिए रेशियो
एक्सटेंशन जो होता है, तो एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन द, देखो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टाइम भी बताया था, L इज इक्वल टू F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू वाई, करेक्ट है। तो इसमें एक्सटेंशन जो है, अगर सेम फोर्स दिख रहा है यहाँ पे, सेम लोड बता रहा है ना यहाँ पे, तो सेम लोड होने की वजह से फोर्स विल बी द सेम, ओके, एंड ऑल्सो सेम लोड एंड सेम मटेरियल। तो मटेरियल सेम होने का मतलब क्या है, यंग्स मॉडुलस इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम, राइट। सो बचता कौन है फिर यहाँ पे, अगर ये F और Y अगर हटा दिया तो इसमें से बचता है L एंड A, बट A इज नथिंग बट एरिया, सो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, we can replace it by that formula, and hence we can say that this extension actually depends on the ratio of length to r square। समझा कैसे, क्योंकि ये पाई भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसलिए लेंथ टू आर स्क्वायर ये रेशियो हमको ढूंढ के निकालना है चारों वायर्स के लिए, ठीक है ना। तो अभी सोचो, अगर एक एक वायर का हम लेंथ और आर स्क्वायर का रेशियो अगर ढूंढेंगे तो पता चलेगा। देखो सबसे पहली वायर का देखो लेंथ क्या है और रेडियस क्या है और उसका रेडियस का स्क्वायर क्या है। नो डाउट, अगर हमने रेडियस और रेडियस स्क्वायर किया तो इसके बदले अगर हमने डायमीटर और डायमीटर्स का स्क्वायर अगर कंसिडर किया और उसका फिर रेशियो अगर लिया तभी भी चल जाएगा। देखो L अपॉन डी स्क्वायर ये जो रेशियो है वो भी हमारे लिए काम का होगा, नो डाउट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखते हो ठीक से कि लेंथ कितना है 1, ओके, दिस इज द फर्स्ट वायर, ओके, सो लेंथ इज 1, रेडियस और डायमीटर ऑफ द वायर इज गोइंग टू बी 1 millimeter। Forget about the units because all of them have the same unit, right? So we're not to consider about the units। तो r स्क्वायर क्या होगा, मतलब d का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, और यहाँ पे L अपॉन डी स्क्वायर जो रेशियो है तो वो बनेगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब ही 1, नो डाउट। ये हो गया फर्स्ट वायर के लिए। इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड वायर देन वी कैन टॉक अबाउट here, and the length of the wire is going to be 2 here, diameter is going to be 2 again। so if you take the ratio एंड स्क्वायर फर्स्ट, ये डायमीटर को अगर स्क्वायर करेंगे ना तो वो बन जाएगा 4, करेक्ट है। एंड इफ यू जस्ट टेक द रेशियो ऑफ L to r square or L to d square then we can be left with 2 upon 4 which is actually going to be 1 by 2 means it is 0.5, करेक्ट है। तीसरा वायर के बारे में अगर बात करते हैं 3 मीटर एंड 3 मिलीमीटर डायमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा उस वायर का लेंथ है 3 मीटर और डायमीटर है 3 मिलीमीटर, तो उसका स्क्वायर बन गया 9 मिलीमीटर स्क्वायर और रेशियो बन गया 3 अपॉन 9 जो कि 1/3 मतलब 0.33 हो गया रिकरिंग, नो डाउट। एंड चौथा जो है तो वो चौथे वायर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंथ इज गोइंग टू बी 0.5, राइट, सो हियर इट इज 0.5 and the diameter is going to be 0.5 again, right, so 0.5 diameter भी दिया हुआ है। तो इससे हमको लेंथ डायमीटर का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25 होता है। तो अगर हमने ये रेशियो लिया देखो ठीक से, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 which comes out to be 2, करेक्ट है, which is the maximum here out of all these 4, दिख रहा है ठीक से। तो ये 1 है यहाँ पे, इधर 0.5 है, इधर 0.3 है और इधर लास्ट में 1 है, तो ये सबसे ज्यादा हमको मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो इस फोर्थ वायर के लिए सबसे ज्यादा होगा, समझो ठीक से। ओके 17 वाला ट्राई करो, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर, जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स फास्ट, 17 वाले का आंसर।
देखो yes. ठीक है, अभी देखो क्या है कि देखो elongation of 0.1% in the wire of cross section 10 raised to minus 6 meter square causes a tension of 100 Newton. Then Young's modulus of the wire is, Young's modulus का फॉर्मूला क्या है हमको ऑलरेडी पता है, it is F into capital L upon A into small l, बराबर है। अभी इसमें F का वैल्यू कितना दिया है, फोर्स का टेंशन 100 न्यूटन, करेक्ट है। Length, original length of the wire is not given actually, but the ratio of this small l to capital L is given. So we have to use this formula in a modified way, in this way. तो ये जो फॉर्मूला है वो F upon A divided by small l upon capital L ऐसे यूज करना पड़ेगा हमको। तो फोर्स कितना है देखो, रिक्शे 100 न्यूटन, no doubt, and that is to be divided by the area of cross section which is 10 raised to minus 6, right? And that is to be divided by the small l upon capital L which is given in terms of this percentage here. तो 0.1% मतलब क्या हो गया, 0.1 upon 100, ठीक है, 0.1 upon 100 मतलब ये बन गया एक्चुअली 0.001, जिसको ये हम लिख सकते हैं 10 raised to minus 3, right? And if we write this here, then 10 raised to minus 3 comes out here, and we can just simplify this further and get 100 divided by 10 raised to minus 6, and that is multiplied by 1 upon 10 raised to minus 3, which is actually going to be 100 matlab 10 raised to 2 into 10 raised to minus 6 goes up, becomes plus 6, and here 10 raised to minus 3 also goes up and becomes 10 raised to plus 3 here, and it becomes 10 raised to 11 as a final, correct hai? So here this 10 raised to 11 means 2 is actually going to be the correct option. We can see clearly. Yes, chalo 18th वाला करो एक बार ठीक से। When the load of wire is slowly increased from 3 kilogram weight to 5 kilogram weight, the elongation increases from 0.61 to 1.02 millimeter. Then work done during the extension of the wire is, yes. So when the length of the wire is increased from L1 to L2, the work done is given by the formula half into F into Y A upon capital L into L2 square minus L1 square. ये फॉर्मूला याद है सभी को? ये होता है बराबर। तो अभी लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमको ऑलरेडी पता है, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वाई ए इंटू कैपिटल स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, करेक्ट। अगर ये हमने डाल दिया यहाँ पे तो हमको मिलेगा हाफ इंटू फोर्स के बदले वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, और इसको ही अगर ठीक से लिखेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है वर्क डन के लिए, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई ए एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल, करेक्ट है। बट इफ यू यूज दिस फॉर्मूला ट्वाइस, दो बार अगर यूज करेंगे तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर by the extension L1 will actually be given by YA upon capital L into L1 square, बराबर, and work done W2 in order to stretch the wire by extension L2 will actually be equal to half into YA L2 square upon capital L, correct है। But here we have to find out this difference. तो यहाँ पे अगर हम सपोज W निकालना है हमको तो W2 minus W1 हमको करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये मिलेगा जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे कि द वर्क डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम 0.61 टू 1.02। तो यहाँ पे हमको सिर्फ वैल्यूज डालने हैं सारे। तो इसमें देखो हाफ एज इट इज वाई दिया है यहाँ पे 3 to 5 किलोग्राम, ओके। अभी यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला हमको नहीं यूज करना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोड जो है तो वो दिया हुआ है, मतलब लोड कितने एक्सटेंड हो रहा है तो वो हमको दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, हाफ इंटू F2 इंटू स्मॉल L2 माइनस हाफ ऑफ F1 इंटू स्मॉल L1, ओके। तो यहाँ पे देखो हाफ तो चलो कॉमन ले सकते हैं आराम से। F2 कितना दिया है, F2 इज 5 किलोग्राम वेट,
अभी 5 किलोग्राम वेट का मतलब है 5 into 9.8 actually, and that is to be multiplied with extension of the wire, which is going to be actually 1.02 mm. So here it is going to be 1.02, and mm का मतलब है 10 raised to minus 3 millimeter, right? Minus, अभी यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा half into f1 into l1, where f1 and l1 is also given here. f1 और l1 जो कि 3 किलोग्राम वेट जो दिया है ना वो f1 है, और l1 मतलब 0.61 जो है वो l1 है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 किलोग्राम वेट मतलब 3 into 9.8. Remember, whenever mass of 3 kilogram is given, the force produced due to the 3 kilogram weight will be actually 3 multiplied by 9.8 mg होता है ना फॉर्मूला वेट का, तो इसलिए यहाँ पे वेट यहाँ पे f1 के बदले काम करेगा, और एक्सटेंशन कितना है उस समय 0.61 है, करेक्ट है? तो ये वाला हमको, और वो भी मिलीमीटर में है, तो उसको 10 raised to minus 3 से मल्टीप्लाई करके हमको मीटर में भी कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, और अभी इसके कैलकुलेशंस जो है तो वो हम कर सकते हैं अभी आराम से. यस, सो इट विल बी एक्चुअली, अभी इसमें से ना क्या कॉमन ले सकते हैं हम, देखो ठीक से, we can take 9.8 common, no doubt, and even 10 raised to minus 3 can also be taken common, right? And what we are left inside is, तो यहाँ पे 5 into 1.02 minus, here it is 3 into 0.61, correct है, which is, चलो ठीक है, keep it as it is, 3 into 0.61, and now we can just solve this further. अब ये 2 जो है वो 9.8 के साथ, ये चलो इसको 10 ले सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि 9.8 is approximately same as 10 only, and that is multiplied by 10 raised to minus 3, and here it will be 5.02, मतलब कितना हो गया वो 5.1 हो गया, करेक्ट है? So here it is going to be 5.1 minus, here it is going to be 3 into 0.61, कितना होता है, 3 1s are 3 and 3 6 are 18, so it will be, yes, 1.83. okay, so in short we have to subtract 1.8 from 5, right? So what we are left with is, so it will be half into, अभी 10 raised to minus 3 into 10 कितना बनता है, 10 raised to minus 2 बन रहा है, करेक्ट है? और यहाँ पे 5.1 minus 1.83 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, देखो 5 में से अगर 1.8 सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमको कितना मिलेगा, 3.2 मिलेगा. यू एग्री विद दिस? approximately, we want approximate answer only, so we can get it as 3.2, and if we just cancel this 2 with this 3.2 here, we can get 1.6, so we can say that 1.6 into 10 raised to minus 2, that is in joule, okay, because it's a work done, right? So work done will be actually 0.016. so check carefully, 1.6 into 10 raised to minus 2 से क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे हमको मिलेगा 0.016 जूल. ओके, सो 0.016 जूल will actually be the correct answer. Okay, so 0.016 joule. Yes. Okay, ये कर सकते हो 19th one. 19th. Yes, the rod has a Poisson's ratio 0.2. Okay, तो रॉड का जो Poisson's ratio है तो वो दिया हुआ है 0.2 करके. The longitudinal strain here it is given to be, तो मतलब longitudinal strain मतलब क्या, dl upon l, which is given to be 2 into 10 raised to minus 3 here. Then the percentage change in its volume is, अच्छा सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम बताया था, lateral strain upon longitudinal strain, जिससे हमको मिलेगा dr by r upon dl by l, करेक्ट है? So we can say that dr by r is going to be, actually it is minus, negative, don't forget this minus sign. So dr by r will actually be equal to minus of sigma into dl by l, correct है, which gives minus of, अच्छा सिग्मा कितना है 0.2
and that is going to be multiplied with dl by l, which is going to be 2 into 10 raised to minus 3, right? That means it will become 0.4 into 10 raised to minus 3. Okay, so अभी परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है वायर का जो वॉल्यूम होता है तो वो पाई आर स्क्वायर इंटू एल इस फॉर्मूला से दिया जाता है। अभी ये तुमको याद करो, मेजरमेंट्स के अंदर हमने एक टेक्निक यूज किया था परसेंटेज चेंज का, याद है सभी को? तो परसेंटेज चेंज इन दिस वॉल्यूम, दैट मींस dv अपॉन v इज इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है, so here it will be 2 times of dr upon r plus here it is the percentage change in the length which is dl upon l simply। तो इसमें से हमको ये जो है, अच्छा it should be capital L actually, why? Because the capital L is going to be the original radius, original length, right? so उसके अंदर का जो डिफरेंस है तो वो dl से हम डिनोट करते हैं, तो ये कैपिटल L है, यहाँ पे भी कैपिटल dl अपॉन कैपिटल L ये हमको मिलता है अभी। or just we can keep it as it is because already we have used it here, right? तो अभी इसमें सब वैल्यूज डाल देंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, देखो dv by v actually becomes equal to 2 times of dr by r. What is dr by r? See it here, it is negative, don't forget again. So it is going to be minus 0.4 into 10 raised to minus 3, correct? Plus here it is dl by l. How much is this dl by l? See here, it's already given, it is going to be 2 into 10 raised to minus 3, right? So here if we just add this together, then we can be able to get that minus 0.8 into 10 raised to minus 3 plus 2 into 10 raised to minus 3, which actually happens to be 2 plus 0.8 kitna hota hai, 2 minus 0.8, so it becomes 1.2, right? So it's going to be 1.2 into 10 raised to minus 3. So here this is going to be actually dv by v, right? So ये dv by v है, but we want percentage change in the volume, right? So percentage change in the volume can be obtained just by multiplying this by 100. So here we get this dv by v multiplied by 100, which happens to be 1.2 into 10 raised to minus 3 multiplied by 100, which becomes actually 1.2 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to plus 2 comes out to be 10 raised to minus 1. And this 10 raised to minus 1 we have multiplied with 1.2 gives us 0.12, and that is going to be in percentages. So here we have got this percentage increase in the volume, which is going to be actually 1.2, and that is also positive. So it's going to be 0.12, sorry 0.12. So 1 is going to be the correct option. समझा क्या ठीक से? चलो 20 के क्वेश्चन नंबर 20 देखो ठीक से। See here, question number 20. Read it once. The breaking force of a wire of radius r and is F. Okay. The breaking force for a wire of same material but double the length and double radius will be. देखो, what is the relationship between the breaking force and the area? देखो यहाँ पे हमने last time ही देखा था कि breaking stress जो होता है कि नहीं, breaking stress, remember, it is actually equal to the breaking force upon area. ये और breaking stress is always constant for a material. जब तक material same है तब तक breaking stress same होगा. Breaking stress depends only on the material. तो जबकि यहाँ पे same material बोला है तो इसका मतलब breaking stress is going to be the same. So we can say that the breaking force will be actually breaking stress into area. And since we know that area is equal to pi r square, so we can say that the breaking force is going to be breaking stress multiplied by pi r square, correct है? Which shows that the breaking force is actually proportional to the square of radius, correct है? अभी यहाँ पे क्या किया देखो, the breaking stress of a wire of radius r is going to be F, correct है? So the breaking force of the wire of same material but double the length and double radius. अभी लेंथ डबल करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट रेडियस डबल करने की वजह से क्या होगा, ये आर स्क्वायर जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट? एंड आर स्क्वायर 4 टाइम्स होने की वजह से ब्रेकिंग फोर्स भी एक्चुअली 4 टाइम्स हो जाएगा. एंड हेंस वी कैन कंक्लूड हियर दैट सिंस द रेडियस इज बीन डबल्ड, so the breaking force will become 4 times, and hence the new breaking force here will actually be 4 times of F, which is going to be here in option 3 here, correct है? So in this way.
ये बाकी बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज रेशियो प्रॉब्लम से, देखो जस्ट रेशियो दिया हुआ है, रेशियो निकालने का है, तो वो बहुत इजीली तुम कर सकते हो आराम से घर पे। थर्टी टू वाला देखो ठीक से, क्वेश्चन नंबर 32, जस्ट रीड इट फास्ट। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज, देखो मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब जब इतना स्ट्रेस वायर के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा तो वायर ब्रेक हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, नाउ okay, its density is also given. See here, the density of the wire is also given here. How much is the density? It is given to be 3 into 10⁻³ kilogram per meter cube. Okay, so density is also given 3 into 10⁻³ kilogram per meter cube, right? Yes, the least length of the wire, which when suspended vertically breaks under its own weight. अभी देखो ऐसा एक वायर है सपोज जो उसके खुद के वेट की वजह से ब्रेक हो जाए, हो सकता है ऐसा कभी। देखो अगर मान लो ये वायर है और इस वायर का जो लेंथ है वो लेंथ हमने इतना ज्यादा रखा जो वो वायर खुद के वेट की वजह से ब्रेक हो जाए, नो वेट इज अटैच्ड एज एडिशनली हियर, but the wire will break under its own weight. So in that case we can say that the condition for this to happen will be the stress produced in the wire due to this its own weight will be actually the equal to the breaking stress, ठीक है। but breaking stress equal to होता क्या है, the force, breaking force upon area, correct है ना। yes, so अभी यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे इसको तो breaking force will be equal to what, how much force is acting on the wire which will cause its breaking, its own weight, correct है, उसका खुद का जो weight है वही यहाँ पे काम करेगा। so weight of the wire will be actually equal to mass into gravity, mg. This will be the breaking force which is to be divided by area, which is actually चलो चलो ठीक है, एरिया को ए ही बोल देंगे, नो डाउट। अभी इसमें से देखो मास जो है, मास को हम कैसे लिख सकते हैं पता है। सो मास कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, करेक्ट है। सो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटी एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय एरिया। बट डू यू नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ वायर? Volume of a wire, since it is in the form of a cylinder, it can be written to be equal to pi r square into L, correct है, or capital L, that is the original length of the wire, but this pi r square is nothing but area ना, so volume can be written as area into length, right? so ये जो volume का formula है तो वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे volume के बदले तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो वो हमको मिलेगा A into L into density rho into gravity G upon A as it is, so that is A gets cancelled and this breaking stress happens to be actually equal to L rho G. And since we want to find out the least length of the wire which when suspended vertically breaks under its own weight, तो मतलब हमको ये लेंथ निकालना है जिसकी वजह से वो वायर खुद के वेट की वजह से ब्रेक हो जाएगा। तो लेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी इनटू ग्रेविटी which happens to be actually, अभी ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है देखो 10⁶ है, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमको यूज करना है यहाँ पे। और डेंसिटी कितना है वायर का, 3 into 10⁻³ and gravity is actually 10, right? so just work this out and we get this 1/3 into 10⁻² कितना आएगा, 6 minus 3 is 3 and 10⁻³ upon 10 comes out to be 10⁻² only, and hence 1/3 मतलब 0.33 and that is multiplied by 10⁻², which comes out to be 33 meter approximately. So it's going to be 34 meter approximately. Okay, yes, the strain is 0.01%. Young's modulus of the wire is also given. The stress on the wire is going to be, we can do it easily. देखो यंग्स मॉडुलस दिया है, स्ट्रेन दिया है, तो स्ट्रेस निकालना कौन सी बड़ी बात है।
क्योंकि देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन is always equal to the Young's modulus, correct है? So we can just express this stress to be equal to Young's modulus multiplied by strain, बराबर है? And what is the Young's modulus given here? It is 20 into 10 raised to 10, correct? And if you multipy it by strain, which is 0.01%, so 0.01% मतलब क्या? 0.01 upon 100, right? So here we can see this will be 20 into 10 raised to 10 and multiplied with 10 raised to minus 4, so that it comes out to be 20 into 10 raised to 6, right? And this is in Newton per meter square. So 20 into 10 raised to 6 कहाँ पे है? Third will be the correct option. Okay. चलो ठीक है. So here we have completed with this level 1. We can go for level 2 next time. Okay, so ये level 2 के जो sums है थोड़ा practice करके रखो घर पे, so that we can continue them and discuss about the doubts next time. चलो, thank you all of you.